Yesterday we had discussed about path length, distance, and displacement. Path length, what is distance, what is path length, and what is displacement, what is position. Okay. Today we are going to discuss about average velocity and average speed. So when an object is in motion, its position changes with the time. But how fast is the position? Just a minute. Okay, average velocity or average speed. When an object is in motion, its position changes with the time. But how fast is the position changing with the time and in what direction? To describe this, we define the quantity average velocity. Average velocity is defined as the change in position or displacement divided by the time interval in which the displacement occurs. Okay, मतलब average velocity क्या होता है कि change in position or a displacement upon change in time. Okay, during the time or time interval. मतलब कि simple if you talk about in a simple way, so average velocity is something like displacement. Displacement मतलब वही हुआ, change in position ही हुआ, displacement upon time interval, उसके लिए लगने वाला time. This is your average velocity. Okay, मतलब उसमें कैसे कैलकुलेट करना होगा कि आप कोई पॉइंट पोजीशन पे स्टार्टिंग में हो, फिर पूरा घूम घाम के किसी सेकंड पोजीशन पे आए. ओके, तो वो आपका पहला इनिशियल पॉइंट होगा लाइक x1, सेकंड पॉइंट आपका x2 होगा, फाइनल पॉइंट या उसको एंड पॉइंट कहेंगे. तो x2 माइनस x1 वही चेक करना, आप कैसे गए उससे कोई मतलब नहीं होता. लाइक आप कहाँ से कैसे होके गए हो, दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग. कि सपोज कि आप कोई पाथ पे हो, सपोज आप अभी यहाँ पे हो x1. ओके, आप पूरा घूम के ऐसे 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 पूरा आए हो, पूरा घूम के ऐसे कहीं से, और आप राइट नाउ यू आर एट हियर. ओके, x2. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम x1 टू x2. तो आपको ये पूरा पाथ कंसीडर नहीं करना, बिकॉज दिस इज नॉट, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाथ लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेस कहाँ हो, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी आपकी x1, एंड पोजीशन क्या है x2. So you have to calculate only the distance between these two things, and this is your displacement. So this is displacement. और time कितना, तो टाइम तो आप यहाँ से यहाँ पूरा घूम के आए हो ना यहाँ तक, तो यू हैव टू कैलकुलेट कंप्लीट टाइम. सपोज कि यहाँ पे थे तब आपका टाइम t1 था, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक पूरे आए तब आपका टाइम आपने नोट डाउन किया t2. तो योर फाइनल टाइम विल बी टाइम इंटरवल, आपको टाइम इंटरवल मिलेगा. सो व्हाट इज डेल्टा x? सो डेल्टा x इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड व्हाट इज डेल्टा t? Delta t is nothing but the time interval. Okay, it is like t2 minus t1, difference between t2 minus t2 and t1. Okay, so your average velocity will be, you can write like this way, average velocity ct is equal to delta x by delta t. Okay, and delta x is nothing but x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Okay, this is the equation for your average velocity. Okay, like the displacement and the average velocity, here the bar over the symbol for the velocity is standard notation used to indicate the एवरेज क्वांटिटी. मतलब यहाँ पे जो बार यूज किया है वो एवरेज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है, सो दैट अगर आप एवरेज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बार यूज करोगे तो फिर वो एंगुलर नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ओके, सो ऐसा यूनिट for a velocity is meter per second or meter second inverse. Although the kilometer per hour is used for many
applications every day. But you can see that at your speedometer, you'll find kilometer per hour. Okay, is used for many everyday applications. Okay, we are not that much comfortable with meter per second, but we are very much familiar with the kilometer per hour. Okay, this is something like which is used for many everyday applications. Like displacement, average velocity is also a vector quantity. Because the displacement is a vector quantity, average velocity is also a vector quantity. But as explained in earlier, for motion in a straight line, the directional aspect of a vector can be taken care by a positive and negative sign only. मतलब वो एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात करने वाले, एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन we'll only discuss about average velocity. For its direction we will use only sign plus or minus. If its sign is plus, then you are moving in a forward direction, but if its sign is minus, you are moving in a backward direction. So that this will show your direction. So we do not have to use vector notation for velocity in this chapter. So we will not use any vector in this chapter. Okay, this is something like this is the graph of average velocity is the slope of a line p1 p2. Like when you are at p1, your point is 10, okay, and time starts from 5 seconds. And when you reach to p2, okay, p2 is nothing but 27.4, and you are at 7 seconds. Okay, at fifth second you are at p1, at 7th second you are at p2. So difference between these two time is 7 minus 5, 2 seconds. So between these 2 seconds you travel from 10 to 27.4. That means you have traveled 17.4 meter of distance. So like they have given the calculation, so that what is its average velocity? So x2 minus x1, x2 is 27.4 minus x1 is 10 meter. Okay, divide by time interval 5 7 minus 5. Okay, so you'll get answer 8.7 meter per second. That means it's your average velocity. Okay, while talking about average, we are not talking about velocity at each and every point. We are just talking about start and end. Between that your velocity may increase or may decrease, okay, at several points. Like if you start from your home, while traveling in your streets you are moving slowly, but when you comes to main road your speed got increased. Okay, and again if you find some bumper or something in the way, okay, you again reduces your speed, so your speed gets reduces. Again you start your speed increases, you go when in again in the next moment if you find a traffic, you start applying brakes and your speed get reduces. Okay, so all these things happens. Okay, but we are not talking about a very instant speeds, various speeds at various instant. What is my speed at bumper, or what is my speed speed in street, what is my speed in main road when there is no traffic. Okay, these are we are not right now, we are not discussing these things. We are only discussing like I started from my home, I reached to my office or my school. Oh, so I will just calculate the total displacement of mine and time taken from I start like from home, I will calculate it as a 0 second, and when I reach to my office or something, I have like 5 minutes or 10 minutes. Okay, so I will convert it into the seconds and I will calculate, and I will find my average velocity. Okay, this is something like average velocity. So there are some graphs of average velocity. So this is the graph of uniform average velocity. So position time graph of the object. So in the first graph A, moving with the positive velocity, that your velocity is in positive. In second graph, moving with the negative velocity, because the graph is decreasing. So the velocity is uh, decreasing. That means it's a decreasing means in a negative direction. It is going in a negative direction. And third one is with respect time, you are not changing your position. So you are at rest. Okay.
So average velocity is defined above involves the only the displacement of an object. We have seen earlier that the magnitude of a displacement may be different from actual path length. Okay, it is possible that the magnitude of a displacement can be same, maybe or may not be similar to the path length. To describe the rate of motion over the actual path, we introduce another quantity called average speed. Okay, so now we are going to discuss about average speed. Any doubts in average velocity? No, sir. Okay, it is note down this point that average velocity can be positive, negative, or zero. Okay, because the displacement can be positive, negative, or zero. So average velocity also can be positive, negative, or zero. Zero कब होगी? जब आप you start from home, you go to office and again come to home. So your initial and final position is similar. So your average velocity zero. Okay. नेगेटिव कब होगी? जब आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, ऑफिस से वापस गए और आप घर आके और दूसरी जगह पे बैकवर्ड डायरेक्शन में गए हो, ऑपोजिट टू ऑफिस। अगर आपका ऑफिस ईस्ट में और आप बाद में घर से वेस्ट में जा रहे हो और तब कैलकुलेट किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा आंसर। नेगेटिव मीन्स यू आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So average speed. So average speed is defined as a total path length traveled divided by total time interval during which the motion has been taken place. Okay. एवरेज वेलोसिटी में क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। यहाँ पे क्या होगा? पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, कि आपने कितना टोटल ट्रैवल किया है वो डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। तो ये इसमें सिंपली क्या आएगा? एवरेज स्पीड, एवरेज एवरेज स्पीड तो आई कैन राइट लाइक पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। ओके, so एवरेज बाय स्पीड टोटल पाथ लेंथ, मतलब आपने जितना भी ट्रेवल किया उतना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, मतलब जितना टाइम उतने डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए लगा वो पूरा टाइम। लाइक आप यहाँ घर से ऑफिस गए, ऑफिस से वापस घर आए, तो दोनों केसेस में आपने घर से ऑफिस गए, सपोज वो कुछ 2 किलोमीटर होगा, फिर ऑफिस से वापस घर पे आए तो 2 किलोमीटर, तो कंप्लीट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय यू कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। और घर से ऑफिस जाने के लिए आपको 10 मिनट्स लग रही है और वहां से वापस आने के लिए 10 मिनट्स, तो यू हैव टेकन कंप्लीटली 20 मिनट्स ऑफ टाइम। सो तो 4 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 मिनट्स कर देना, उसको आवर में करो, सेकंड में करो, मीटर पर सेकंड में करो, इट इज योर चॉइस। ओके, एवरेज स्पीड हैज ऑब्वियसली द सेम यूनिट मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स दैट ऑफ वेलोसिटी, दोनों का सेम यूनिट आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों का यूनिट सेम होता है। सो और टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल का भी यूनिट सेम होता है, सेकंड ही होता है, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का डिस्टेंस सेम, सॉरी, दोनों का यूनिट सेम होगा, but it does not tells us in what direction the object is moving. बट आप एवरेज स्पीड से आपको ये नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पाथ लेंथ स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो एवरेज स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, उसे उसे आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं, उसके सिंपली इतना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, बस, और कुछ नहीं। दिस इज समथिंग लाइक एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी में आपको पता चलता है कि डिस्टेंस कितना कहाँ से क्या ट्रैवल किया है और कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल किया। अगर पॉजिटिव हुआ तो यू आर मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव हुआ तो यू आर मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उससे डिस्टेंस डायरेक्शन पता चलती है। बट एवरेज स्पीड से आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें सिंपली एक ही चीज है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो जो एवरेज स्पीड होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि
हमें सिर्फ पाथ चाहिए कि हमने कितना पाथ ट्रेवल किया। अगर मैं घर से ऑफिस गया तो आई हैव कवर्ड सम पाथ, और ऑफिस से वापस आया तो स्टिल आई हैव कवर्ड सम पाथ। तो वो दोनों पाथ का सम हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस, और पाथ लेंथ, टोटल कितना पाथ हमने ट्रेवल किया, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन is and in the same direction, the magnitude of displacement is equal to the total path length. अब अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो और फॉरवर्ड ही जा रहे हो, बैकवर्ड नहीं आ रहे हो कभी भी, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगा, क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम ही बनेंगे दोनों के लिए। ओके, अगर आप फॉरवर्ड जाके वापस बैकवर्ड आ रहे हो तो पाथ लेंथ आपका ज्यादा आएगा बट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। बट आप अगर स्ट्रेट ही जा रहे हो, पीछे नहीं आ रहे हो, ओके, तब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगा। In that case, the magnitude of average velocity is equal to the magnitude of average speed. This is not always the case, okay? As you will see in the following example. ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, चलो 2 मिनट देता हूं मैं आपको। पता चला ना इसमें क्या है? कार इज मूविंग along the straight line, say OP in a figure 3.1। जो 3.1 फिगर दिया है इसके पहले, उसमें दिया है car is moving along the straight line, say OP in a figure. It moves from O to P in 18 seconds, returns from P to Q in 6 seconds. What is the average velocity and average speed of the car in going? A, पहला A क्या आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो उसमें A क्या कैलकुलेट करना है, फ्रॉम O to P, और B कैलकुलेट करना है फ्रॉम O to P बैक टू Q। अंडरस्टूड? we need here only 3 points, O, P and Q। O से P आप 18 सेकंड्स ले रहे हो, P से वापस Q आने में आपको 6 सेकंड्स लग रहे हैं। चलो मैं ये सॉल्व करके देता हूँ। ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन थी, सो एज वी नीड ओनली 3 पॉइंट्स, O, ये O पॉइंट था, ओके, 0 पे था, ये 240 पॉइंट था, और ये था आपका 360 पॉइंट, मीटर में था ये सब, और यहाँ पे Q था आपका, यहाँ पे था P। तो आप पहले क्या कर रहे हो, O से P तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड। ओके, यहाँ तक जाने के लिए आपको 18 सेकेंड्स लग रहे हैं, और P से वापस Q पे जब आ रहे हो आप, ओके, so you need only 6 seconds। so इसको हम लोग टाइम t1 लिख देते and we can write it as a t2। ओके, तो ये दो चीजें हैं हमारे पास। so 18 seconds to 6 seconds, okay। so now from first A कैलकुलेट करना है हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। फॉर एवरेज वेलोसिटी, ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कहाँ से O to P तक का ही है पहले, O to P। सो P पोजीशन पे कितना डिस्टेंस है, 360, और O पे कितना है, 0। तो 360 माइनस 0, और टाइम कितना है, तो 18 सेकेंड से टोटल टाइम यहाँ से। तो 360 माइनस 0, 360 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा,
20 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये उसका यूनिट आएगा। ओके 360 माइनस 0 360 आएगा। 18 इंटू 18 टू 360 36 होता है, तो 2 और 0 तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हुआ। अब एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी हुआ ये, इट्स अबाउट वेलोसिटी। ओके अब स्पीड, तो स्पीड के लिए भी वही आएगा। एवरेज स्पीड के लिए आई विल राइट दिस नोटेशन फॉर एवरेज स्पीड। उसके लिए भी पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ यहाँ से क्या आता है, 0 से स्टार्ट करते 360 के बराबर है, तो टोटल पाथ लेंथ 360 यहाँ पे। ओके और डिवाइड बाय टाइम उतना ही लगा है 18 सेकेंड्स। तो अगेन योर एवरेज स्पीड आल्सो 20 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट portion of the question A. Now we are going to discuss for B. अब आप कहां से कहा जा रहे हो, O से P और P से वापस कहां पे आ गए आप, Q पे। So this is your way. तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट O है और एंड पॉइंट Q है। So for average velocity, okay, for average velocity we will like एंड पॉइंट कहां पे, 240 पे, और स्टार्ट पॉइंट कौन सा था, 0। तो 240 माइनस 0। ओके अब टोटल टाइम, तो आप डायरेक्ट ओ से क्यू पे नहीं आए हो, आप ओ से पी पे गए, देन यू कम बैक टू क्यू। ओके तो ओ से पी तक के लिए आपको 18 सेकेंड्स लगे और पी से वापस क्यू तक आने के लिए 6 सेकेंड्स लगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6, so it will be 24. So 240 divided by 24, so you'll get answer 10 meter per second, second inverse. Okay and for average speed, for speed और स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। आई विल राइट इट लाइक दिस वे, आई विल नॉट यूज बार। तो टोटल स्पीड के लिए अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो आप ओ से पी तक गए हो, बाद में पी से वापस क्यू पे आए, तो पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, 360। ओके प्लस पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, तो 360 माइनस 240 तो 120। ओके 240 मत लिख देना, 120 और डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 18 प्लस 6, 18 plus 6, so it will be 480 divided by 24, 480 divided by 24, you will get answer 20 meter per second. So your average, sorry, 20 meter second inverse. This is your average speed. Got it? Any doubts? Example समझ में है? Example 3.1 है ये, simple है. So now you are clear about average speed and average velocity. Yes, sir. Anybody has any doubts? Okay, got it. 20 meter per second and all. The speed in general greater than the magnitude of velocity. So from this example, we can say that the speed in general greater than the magnitude of velocity. ग्रेटर और इक्वल्स टू बोल सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्ट्रेट ही जाओगे तो दोनों इक्वल ही होंगे हमेशा, बट आप अगर फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आओगे तब स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगा। Okay, so any doubts? So now instantaneous velocity and speed. How much time remains to us? अब ये टॉपिक तो नहीं होगा इतना टाइम में, टेक सम टाइम। कोई ब्रीफली बता देता हूँ, बाद में हम डीपली डिस्कस करेंगे इसको कल।
So average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval, but does not tell us about the how fast it moves at a different instant of time during that intervals. Okay. For this, we define instantaneous velocity or simply velocity at an instant t. Okay, like अब कैसे होता है कि like you are traveling some path. So like you started from here and you gone to here. This is your starting position and this is your end position. So average speed or average velocity tells you about only about when you started and when you ended and when you have ended. Okay. So during that, what is your speed? You don't know anything about it. अब इसके बीच में आपकी स्पीड कितनी थी ये नहीं पता होती किसी को. ओके. ये जो इक्वेशंस थे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगी. एवरेज वेलोसिटी भी नहीं देगी. लाइक कि एग्जैक्टली इस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड थी या इस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली कितनी स्पीड थी या इस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड थी, तो वी डोंट नो इट. तो उससे क्या होगा, अगर हम ये टाइम इंटरवल देखो यहाँ से यहाँ तक का, इसको अगर छोटा करते जाए लाइक इतना फिर इतना कर दिया फिर इतना इतना कर दिया, ऐसे अगर छोटे छोटे करते जाए तो वी विल मोर क्लोजर टू द इंस्टेंट्स. तो अब अगर हम टाइम इंटरवल को ही छोटा 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 बहुत छोटा कर दे, मतलब कि हर छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में चेंज होने वाली स्पीड हम मेजर करने लगे, सो वी विल गेट द स्पीड एट एग्जैक्टली इंस्टेंट. मतलब कि 5वें सेकंड पे कितनी स्पीड थी या 10वें सेकंड पे, 10 सेकंड में कितनी स्पीड थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरवल लाइक इन ड्यूरिंग अ 10 seconds of interval how much your speed. No, I am not talking about it. I am talking about exactly at the fifth interval. At the fifth second, what is my speed? Or what is my velocity? At 7th second, what is my velocity? For that, you need to know about instantaneous velocity. For that, you need to reduce the time. Okay? Because अगर आप टाइम रिड्यूस करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी रिड्यूस होगा. ओके. और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे आपको क्या मिलेगा कि जैसे कि आपने यहां से स्टार्ट किया और एग्जैक्टली यहाँ पे आए जस्ट, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है. ओके. सही से देखना बराबर. यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड यू हैव एंडेड एट हियर. तो इतने टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट नहीं हुआ होगा, ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट पे हो आप. तो इतने टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो वही आपका डायरेक्ट इंस्टेंट स्पीड मिल जाएगा आपको या इंस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा. ओके. सो यू नीड टू रिड्यूस अ टाइम. तो टाइम कितना होना चाहिए, सो डेल्टा टी हम नीचे लिखते हैं डेल्टा टी. इट शुड बी टेंस टू जीरो. टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या होता है, मीन्स योर टाइम इज नॉट जीरो बट इट्स अप टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो. लाइक कोई एक नंबर है, लाइक ये नंबर है आपका 0.00002. तो दिस नंबर इज नॉट एक्चुअली, अगर हम ऐसे नॉर्मल लाइफ में बोले तो दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, but we cannot say that it is exactly zero. We say it's almost zero. So this is something like called tends to zero. Tends to zero का मीनिंग होता है कि almost zero, not exactly zero. Exactly zero मतलब आप उसी पॉइंट पे रहोगे, बट आपको टाइम कितना लेना है, tends to zero मतलब बहुत कम. ऐसा मतलब कि आपने इस इंस्टेंस पे स्टार्ट किया और जस्ट लाइक इतने सेकेंड्स में आप कहाँ पे पहुंचोगे, ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट पे रहोगे. So during that, you have traveled some distance, so you'll get the exact velocity at that point. For that, in a physics, new terms come in a picture. It's called derivation. So for instantaneous velocity, or simply velocity at an instant t, the velocity at instant is defined by the limit of average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. Infinitesimally small मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा ना कि you can't simply measure it, almost zero. In other words, v is equal to आपका जो एवरेज स्पीड का इक्वेशन था, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, उसको लिमिट करना है आपको. कब तक, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो को लिमिट करना है. सो यू विल व्हेन यू लिमिट द टाइम वेरी स्मॉलर, you will get a very smaller displacement. It's almost a zero displacement. Okay, at almost zero time. So you will get an instant velocity.
तो आपको पता है कि इतना कम टाइम ले रहे हो आप, लाइक 0.0002 सेकंड टाइम ले रहे हो, उतने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा या कितना डिस्प्लेस हुए होंगे आप? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही डिस्प्लेस हुए, मतलब आप उसी इंस्टेंट पे, मतलब आपको उसी इंस्टेंट पे स्पीड मिल जाएगा। ओके, यू विल गेट द स्पीड एग्जैक्टली दैट इंस्टेंट, so that it is given by dx by dt। so ये जो चीज है, it is converted into dx by dt। जब भी आप किसी चीज को लिमिट करते हो, उसका डेरिवेशन आप लिमिट करते हो, तो you will come at this point। this is the equation for your instantaneous velocity, v is equal to dx by dt, and this is dx by dt is nothing but the derivation of x with respect to time, what is called। एक्चुअली देखो, ये dx क्यों होता है या क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है पता है, ये एक मैथमेटिक्स है जो 12th में आता है सबको। अभी तक आपने डेरिवेशन या इंटीग्रेशन ऐसी चीजें कुछ नहीं पढ़ी। डेरिवेशन मतलब क्या होता है, किसी को किसी बहुत बड़ी चीज हुई ना, उसका अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, लाइक यहाँ पे हम टाइम का डिस्टेंस का डेरिवेशन कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेफरेंस से हम उसका डेरिवेशन कर रहे हैं, तो वो उसकी स्मॉलेस्ट अमाउंट तक जाता है, स्मॉलेस्ट स्मॉल स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। ओके, वहां तक चला जाता है। मैं इसको कल बहुत डीप में बताऊंगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आई विल गो इन डिटेल्स। तो आज के लिए मैं इतना ही समझाऊंगा। बट क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बना है, लाइक आपके पास कोई लोहे की चीज है या स्टील की चीज है। ओके, तो उसके सारे पैरामीटर्स होता है, तो आपको तो पता है कि लोहे की चीज है तो वो किससे बनी होगी, लोहे के एटम्स से, फेरस से, लाइक दिस। ओके, सो जो लोहे की चीज होती है वो लोहे से बनी होती है, मतलब उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेरस के एटम्स होते हैं सारे। तो जब आप पूरे लोहे की चीज है, बहुत बड़ी चीज है, उसका अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन या विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइज डेरिवेशन करोगे, तो आप उसके स्मॉलेस्ट पार्ट तक चले जाते हो। आई विल गो इन डिटेल इन टुमारो कि व्हाट इज डेरिवेशन, हाउ टू डू द डेरिवेशंस और ऑल दिस थिंग्स। टुडे यू जस्ट थिंक ऑफ इट, यू जस्ट कंक्लूड एट हियर बस। आप यहाँ तक, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। Where the symbol delta limit delta t tends to zero stand for operation of taking limit as a delta t tends to zero of a quantity on its right। मतलब आप लिमिट कर रहे हो उसको, मतलब आप उसको लिमिटेड कर रहे हो, एक छोटे से इंटरवल तक लेके जा रहे हो। इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस द क्वांटिटी ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 3.3a is the differential coefficient of x with respect to time t, and it is denoted by dx by dt। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t ऐसे बोला जाता है, मतलब उसको dx by dt बोला जाता है। सो डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t ऐसे उसको बोला जाता है इन कैलकुलस मैनर, मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। और इसी को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट, इसी को कहा जाता है। ये डी क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं कल बताऊंगा। ओके, टुडे वी स्टॉप हियर। ओके, डोंट वरी, कल आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है।